हाँ चल, वीडियो को तो प्रवेश को आप ले लेना, PSI में अच्छा एक आर्टिकल। We have discussed how deepfake is impacting in the society and particularly of the women earlier. And regarding the daily wages, rural workers in MP, Gujarat get the lowest daily wages. Wage growth for the agriculture and non-agricultural laborers remained subdued during 2022 and 2023. So if we can compare with the other states, for example, Kerala, Jammu Kashmir, approximately 217 to 280 इसको लिख सकते हैं। और लेकिन बाकी कंट्री, बाकी स्टेट में जैसे केरला एंड जम्मू कश्मीर में मोर देन 500 है। So this showcases difference in the living condition, livability and poverty index. Although the job demand under Manrega has declined year on year basis, it is still prevailed over the pre-pandemic level, suggesting that unorganized sector has not especially in the unorganized sector of the economy is not yet complete. तो जो भी इम्पैक्ट है कोविड का अभी भी है ओवरऑल पोस्ट कोविड। We have discussed PLI scheme, which is an incentive mechanism given by the government of India for IT sector. 75,000 crores have been earmarked for electronics and communication industry in India. The PLI scheme for IT sector. So India is a major importer of IT hardware coming from China. Import is around 558 million against 618 million in the year. This showcases that जो इम्पोर्ट है वो भी धीरे धीरे घट रहा है और हम लोग जैसे सेल्फ रिलायंट होंगे आने वाले 1-2 साल में, तो जो डिपेंडेंसी ऑन चाइना है वो फर्दर घट सकता है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो डोमिनेशन चाइना का है, इंडिया अराउंड 70% इम्पोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना। सो ब्रॉडर लेवल पे बहुत बड़ा डिपेंडेंस है। सो वी आर अगेन अंडर दी मेक इन इंडिया स्कीम एंड क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वी रिड्यूस दिस डिपेंडेंस अपॉन चाइना। And along with that, we also require that we do not only focus on the PLI scheme for the to curb the imports. We also need to focus on the R&D so that we can lead the export now. Yes. Then coming to the next article, North India has replaced the South as a top supplier of blue collar workforce to GCC nation. हमेशा बात करते हैं केरला से माइग्रेशन है कहाँ पर, तो यूएई में, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतार एक्सेट्रा। बट जो स्टीरियोटाइप है वो चेंज हो रहा है। अब नॉर्थ इंडिया से फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार, वो बाकी जगह तो माइग्रेट करते ही जो ब्लू कॉलर वेजेस अर्निंग पीपल है वो अब यूएई में और सऊदी अरेबिया, कतार में भी काम करने के लिए। तो टॉप लेबर 5 लेबर सेंडिंग स्टेट्स एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है विद रिगार्डिंग टू द वर्कफोर्स इन द ब्लू कॉलर एरिया। 90% ड्रॉप है वर्कफोर्स में गोइंग टू द मिडिल ईस्ट नेशन, केरला विटनेस्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि क्या बॉन्ड से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी बढ़ सकता है?
किससे? बॉन्ड बॉन्ड तो ये ना, ओ मतलब बैंक, बॉन्ड्स, बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है, बॉन्ड इक्विटी। मतलब दूसरा आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा हूँ। बॉन्ड से बढ़ सकता है क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंडियन बॉन्ड में रुपीस के हिसाब से, तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के थ्रू बढ़ सकते हैं, जैसे हमारे में मसाला बॉन्ड्स हैं या ग्रीन बॉन्ड्स की अगर आप बात करो। ठीक है। हाँ। Yes, so bonds leads to internationalization of rupees, and when we are seeing that economical, social governance bonds today, which are very much focused by the SEBI, so that is one of the factor behind robustness of the internationalization of the rupee in the global market. The next article, we have talked about the diamond export in India. It has, in the year, it has fallen to 10,490 crore. Previous month, मंथली डेटा है, इतना जरूरी नहीं है इसका। तो इंडिया फॉरेक्स रिजर्व है फॉलन टू $590 billion, डेटा है एक्जैक्टली। कैन सीवियर एयर क्वालिटी ट्रिगर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये बात किए थे पहले कि कैसे जो टाइनी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, दे इंटर आउट द ब्लड stream via lungs. PM2.5 contains sulfate, nitrates, heavy metal, black carbon, damaging the inner lining of blood vessel and increase the blood pressure. तो डायरेक्ट रिलेशन है एयर पोल्यूशन से और ब्लड प्रेशर से, और उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी। डेमेंशिया एंड अल्जाइमर, इट इज अ ओल्ड एज डिजीज, वो धीरे धीरे होता है, क्रोनिक डिजीज है बेसिकली। और अब देख रहे हैं कि हम किस तरीके से जो एयर डिग्रेडेशन, जो पुअर एयर क्वालिटी के अंदर जब हम रहते हैं, तो हमारे को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलते हैं, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिलता है एज पर द न्यू रिसर्चेस, एंड विटामिन डी डिफिशियंसी, रेनल, किडनी, heart, cardio, stroke, all these are the common diseases which are today, you know, having clutches over the people who are living in the poor atmosphere. और जब हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन की, तो आउटडोर इंडोर एयर पोल्यूशन दोनों ही कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहे हैं इन बीमारियों के पीछे। Then Delhi, Mumbai, Chennai, these are the millionaire cities and having the high-rise buildings, high level of concentration, population density, industrial development. All these are the cumulative factors which are leading to all these problems. And some particulate matters, like when we talk about the PM2.5, PM10, heavy metals, black carbon, sulfates, nitrates, they enter the blood streams and blood vessels and also cause the blood pressure rise, which has again the implications over the whole organs, and leading a lot of social expenditure on the healthcare system. नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल, ऐसे हम लोग बात करते हैं जीन थेरेपी का, वैसे ही कैसे जीन थेरेपी यूज किया जा सकता है फॉर रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल होता है उसको कैसे कम किया जाए। तो रिसर्चर ने पाया कि जो ब्रीफ में आर्टिकल क्या बनाना चाह रहे हैं, रिसर्च ने डेवलप किया है एक सिंगल डोज जीन एडिटिंग थेरेपी टू कंट्रोल हाई एलडीएल लेवल इन दोज विद जेनेटिक डिसऑर्डर, और जिनका हार्ट हार्ट डिजीज और अर्ली हार्ट अटैक का कंडीशन। तो वर्ब थेरोपेटिक्स से इन्होंने डेवलप किया है एक थेरेपी जो बताता है कि 55% से ब्लैक बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, एलडीएल जो होता है, एचडीएल और एलडीएल दो होता है, लो लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल। तो एचडीएल अच्छा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये वर्ब 101 मेडिसिन ये एक तरह से रिड्यूस करता है। तो उसी के ऊपर दिया हुआ है कि यूजिंग क्रिस्पर, क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है जिससे आप जीन एडिट कर सकते हो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। उसको कैसे एक यूज किया गया है PSK9 जीन जो बॉडी में होता है, जो हेल्प करता है, रेगुलेट करता है एलडीएल नंबर को, रिसेप्टर को। तो इसको इनहिबिट कर देगा, मतलब कम कर देगा, उससे जो एलडीएल है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो एक अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, ऐसा कुछ अभी अभी ज़्यादा बड़ा फेज में नहीं।
तो ये बाद में होगा, तब देखा So, जाएगा। Ashik, लेकिन एक will it be cost effective measure? हाँ, कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि ये ड्रग्स है ना, जो हम लोग बात करते थे प्लाज्मा वाला, वो सब चीज क्या है, ट्रांसफ्यूजन का मैकेनिज्म है ये। लेकिन ये मेडिसिन है, देखो यहाँ पर इन्वेस्टिंग मेडिसिन है, तो मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक। लेकिन जो प्रोसेस है ना वो लॉन्ग, मतलब जैसे हम लोग बात करते थे कार्ट कार्ट सी थेरेपी, ये सब हाँ, प्रोसेस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है, ये सब कॉस्ट इफेक्टिव होना मुश्किल। ओके मानसी, वी कैन टेक अप नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आर्टिकल। Pravesh, you can start with this. yeah, sure, man. So now we are taking the paper Financial Express, and Mansi, can you please enlarge the screen a little bit? It is the maximum, Pravesh. Otherwise, वो scroll Okay. करने में problem होगा. Okay. So these we have talked about, and Okay, so यहाँ पे ये concept ले सकते हैं. Wow, क्या emerge हो रहा है? okay, so Join My Wedding is one such online and exclusive platform that allows the travelers and the foreigners to buy the tickets to wedding in India. So, well, this is something. Uh, कमर्शलाइजेशन ऑफ वेडिंग yeah, बेसिकली। exactly. लेकिन तो कल्चर ये पावर को business भी हो गया है. इम्प्रूव कर सकते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, एक तरह सब चीज कर सकते हैं इसको। ये तो But कुछ this shows that how we are trying, the similar patterns of commercialization of the recreational things. Because earlier, what used to happen that in marriages, everyone was, invited. But today, what we are seeing that some sort of exceptionalism has started taking place in the marriages. And this Join My Wedding platform is again one such example where it is trying to commercialize. And when we are talking about the soft power, so the foreigners and the travelers should be given, the more, welcoming hand to come in the wedding and to see that how it takes place rather than providing them tickets. नहीं, यहाँ So पे I think I would say एक इसका मेजर बेनिफिट भी हो सकता है और मेजर नेगेटिव भी हो सकता है. बेनिफिट वुड बी कि इट कैन मेक मैरिज कॉस्ट इफेक्टिव थिंग, एंड क्योंकि एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है. नेगेटिव इसका ये होगा कि मैरिज जो हमारे ट्रेडिशन में है, इट इज वेरी लाइक प्योर कल्चरल एक्सरसाइज है, जो उसका एसेंस है दैट कैन गेट डिस्ट्रॉयड अगर इसमें ये कमर्शियल एलिमेंट आ जाता है. सो दिस कैन बी बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दिस. so. This is a highly मैरिज subjective को thing. हाँ, मैरिज को ज्यादा वी एसोसिएट एज सेलिब्रेशन विद आवर फैमिली मेंबर्स, तो इसमें विल हैव फॉरेनर्स एंड तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है बैलेंस. India to be a $7 trillion economy by 2030. So this is a good, target base which has been cited by the chief economical advisor, because earlier we were targeting about the 5 trillion economy, but now again the 2% hike in that. So he's saying that 7 in the 7 is a buzz slogan, that 7 trillion economy in this 7 years. And the recent RBI estimate says the Indian economy ka jo growth hai, that is expected around 6.5%, and IMF is also having the projections around similar, which is 6.3%. Then Kela Startup Mission in Tiruvananthapuram, we have a new leader. He was speaking at that program particularly, and the culture of entrepreneurship, innovation are actually going on in India on different levels. We are focusing on the indigenization of the products. We are curbing imports. We are making more exports. We are leading one district, one product exports of the organic farming, and DPIIT is also leading the, effective privatization of the PSUs which were not working properly. So on multiple sectors, multi-dimensional strategies are working in collaboration with the states as well as with the think tank Niti Aayog. And obviously, we are going to achieve the 7 trillion target by 2030, along with the carbon neutrality target.
to some extent, but to large extent in the 2017. या कि अगर हम स्टार्टअप लैंडस्केप और इकोसिस्टम की बात करें तो राइट नाउ इंडिया में अराउंड 1.1 लाख स्टार्टअप्स हैं जो वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है. सो दीज आर द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स जिसमें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इंडिया में राइट नाउ 110 यूनिकॉर्न्स है, मोर देन 110 आर देयर. तो Yeah, आचल and this बता सकते हो व्हाट आर यूनिकॉर्न्स? Diya, what are unicorns? I'm not sure. Okay, just actually it is a startup company which is having $1 billion. ठीक yes, है. Karuna. Okay. So this Department for Promotion of Industry and Internal Trade is the integral department of the Ministry of Heavy Industries under the Government of India. So Prerna, please, see much about this in detail later on. Mansi, you can scroll now. So here it is mentioned that what are the healthy diets we can take during the winter season, and obviously the mota anaj, the millets, and these are the prominent food intakes are popularized in India. Roasted nuts, ground nuts, and the carrots, radish, beetroots, which we use in multiple ways in the desserts, in the cereals, and in the our daily food intake. Then curd is a gut friendly and help to boost the immunity. It is a source of probiotics, protein can Mansi, I was reading that. Yeah, it is a source of probiotics, protein, calcium, magnesium, and there is no contraindication clinically to include curd in the winter. So there is no harm in that. If it doesn't suit someone, they can take freshly made curd at room temperature during the time. So this is showcasing that how the dairy products are one of the important sources of the proteins and the vitamins and can lead to reduce the implications of the climate change like pollution which we are bearing in the cities, and it is a alternative of the street food prominently. Then हम TB की बात करते हैं तो why is okay, so Achal is asking from every one of us that what is the difference between probiotics and prebiotics. So Oshik, now you please explain this concept. इसको मैं बता दूंगा, Okay. तो पढ़ना पड़ेगा Ansi, if you have any idea अच्छा था regarding this. प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक. नहीं, I will I'm write in the not group. having clarity about this. Okay, no issues. So why is India's TB burden getting bigger and bigger? So It is because TB of the 3-4 reason, I think. yeah. Post-COVID stress on the lungs, etc. Second is antibiotic resistance. Third is pollution sanitation issues, particularly targeting the mostly of the vulnerable section of society. तो ये Okay. हो सकता है. चौथा मॉनिटरिंग थोड़ा स्लो है इसका, और तो उसी कारण हो सकता है. And what are the vaccines available for the TB, Oshik? वैक्सीन स्पेसिफिक नाम नहीं पता, लेकिन अगर उसमें रिम्फामेसिन है, लेकिन वो वैक्सीन नहीं, वो ड्रग मेडिसिन है वो. I think there's a वैक्सीन का लिखना होगा. BCG vaccine, Bacilli Calmette Green vaccine for the TB, and it is popularized by the government of India under the Indradhanush program also. So this is for that. This is a repeated topic, exactly the same article already discussed twice. Okay, this is interesting. Okay, so why vultures might be the smartest birds? So vultures हमारे यहाँ culturally भी बहुत sacred माने जाते हैं, especially in the Parsi community, and vultures हमारे लिए माने जाते हैं then the helps in degradation of the animal waste. So it is called a mirroring behavior, and lappet-faced vultures native to Africa. So this is one particular species native to Africa, lappet vultures.
or flexible neck they have, featherless head for the so self-cleaning, creative, cunning, and wide-ranging mind they have, and they depend on the scarce resources. They are famously known as the brainy parrots and corvids. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिका, so they have the black vultures and they have learned to play midwife to sea lions snipping in the coats of newborn pups. So vultures wide angle intelligence, the way it scouts for scars. तो बेसिकली वही बात आ जाती है कि जो vultures होते हैं, it is one of the important part of the biodiversity, having the cultural values also. Then we have the vulture protection programs in India because vultures are also um, affected by the anthropogenic इंडिया में factors, जो whether it is a climate change or it is a human. What, Mansi? Indian vulture population collapsed by 99%. So this is There's a grave concern. 99% have been depleted. So we are focusing on various initiatives when we talk about the Wildlife Crime Control Bureau, then the Animal Welfare Rights Authority of India. So multiple agencies are working to increase the population of the vultures in India. इंडिया में And community इंडिया में vulture sanctuaries कौन सी states में located है? vultures. Sanctuaries, like wildlife I sanctuaries. think, Mansi, I think Karnataka, I think we have the Ramnagar sanctuary. Ramanagaram. Yeah, so that sanctuary is in Karnataka. ठीक So है. And one I know. answering the Ansel's question, why vultures population decreasing? It is because of the diclofenac, that is the anti-inflammatory drug that is being used in the cattle. Or vultures, they feed on the cattle, dead cattle, and they die from it. हाँ, लिवर तो इंडिया में हाँ, लिवर इशू होता है 90 उनका. से, हाँ, this is सेकेंड इज द पॉल्यूशन हो गया, सैनिटेशन एंड हंटिंग हो गया. तो ये 3-4 एरिया है जिसके कारण. Okay, so okay. Now we We have can discussed this one, open air. we have talked. So I think we have done this. For the Hindu newspaper is left. Okay. तो ये देख सकते हैं कि लोकसभा में 700 से अधिक निजी विधेयक लंबित हैं. तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट है वो ज्यादा एम्फेसाइज करती है पब्लिक बिल्स पे रादर की प्राइवेट बिल्स ऐसा माना जाता है कि जो ऑपोजिशन मेंबर्स होते हैं वही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो प्राइवेट बिल्स होते हैं वो मेजोरिटेरियन जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसका एमपी भी वो बिल पास कर देता है. लेकिन आई थिंक वी हैव द रिजर्वेशंस ऑफ दिस बिल कि ये फ्राइडे को ही पेश किया जाएगा और अपने आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको एग्जिट लेना पड़ता है फ्रॉम द पार्लियामेंट हाउस फॉर सम डेज एंड ही एंड हिज ओन ऑफिशियल हैव टू प्रिपेयर द होल बिल रादर कि मिनिस्ट्री उसको प्रिपेयर करे. सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग and energy consuming procedure. So that is why we have a long pendency of the private bills. But definitely the parliamentary committees, when we are talking about the ad hoc committees, standing committees, so they should also look the provisions of these bills if they are in the betterment of the country. अवैध खनन देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने अवैध खनन के लिए सख्त वो किया है कि सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी. नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे जिससे अवैध खनन के ऊपर निगरानी रखी जा सके. वन विभाग के ऊपर ये भविष्य में और पौधे लगाए जाए, इसका प्रयोग किया जाएगा. और जो पौधे पहले से ही अस्तित्व है जिनका, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको किस तरह से बचाया जाए, इन चीजों के ऊपर काम किया जाएगा. वाहन और व्यक्ति जो अधिक चल रहे हैं वहां पर, ये जो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, उनको जब्त किया जाएगा. झलकारी बाई जयंती 1857 की लड़ाई में शामिल थी, उनके लिए है हरियाणा राज्य की तरफ से. बहुत तापीय ऊर्जा कहाँ से दी है जानकारी भाई आज दिव्या? हरियाणा मालूम से. नहीं, हरियाणा में भी कहीं से होंगी ना. इतना नहीं पता, ये नहीं पता एग्जैक्ट जगह कहाँ से थी. पलवल हो सकता है बिकॉज वहां पे ये होस्ट किया जा रहा है. इट कैन बी, मतलब श्योर नहीं है, चेक करना पड़ेगा. भूतापीय तकनीक से शिमला हिमाचल प्रदेश में सीए स्टोरेज बनाए जाएंगे जो कि
सेब के उत्पादन जो होता है उनको वहां पर स्टोर करके रखा जा सके ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है उनको भी कम किया जा सकेगा। सीवी रमन 1928 में कोलकाता पर से 28 फरवरी को जो रमन प्रभाव था उसके लिए इन्होंने 28 फरवरी को साइंटिफिक डे मनाया जाता है। पुरस्कार मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार 1938 में ही। दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली से संबंधित है। 1948 में बेंगलोर में रमन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिकल की स्थापना की है। इन्होंने वैज्ञानिक भारतीय अकादमी की स्थापना की है। इसके रमन इफेक्ट के अलावा इन्होंने और भी साइंस फिजिक्स के वो दिए थे जिसमें प्रकाश के आवरण वर्तन से संबंधित पर काम किया है। और इन्होंने हाइपरसोनिक प्रवृत्ति से रिलेटेड किया था जिसमें प्रकाश के विवरण से संबंधित सिद्धांत दिए थे। क्रिस्टल के आवरण कंपन से एक्सरे द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव होता है उससे संबंधित भी इन्होंने सैद्धांतिक अध्ययन दिया था। इन्हें लेनिन पुरस्कार भी मिला था नोबेल पुरस्कार के अलावा। इसमें बस एक चीज समझाना है कि जो लिखा हुआ ना कि रमन इफेक्ट, हाँ तो क्या अगर होता पूछा जाए कभी भी कि अगर कभी पूछा जाए, अगर 2-3 लाइन लिखना होता है अगर आंसर में भी कभी पूछा जाए रमन इफेक्ट क्या है, तो अगर इसका एग्जांपल ना रेनबो को, कि अगर जो लाइट पास होता है तो इसमें कितना स्पेक्ट्रो, हर एक लाइट अलग अलग उसका वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होता है, इसी कारण उनका डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, टूट जाता है ना, वाइट लाइट टूट जाता है। तो स्प्लिटिंग वैसे ऑफ ही, व्हाइट लाइट होता है? हाँ स्प्लिटिंग, तो वही स्प्लिटिंग के हिसाब से ही रमन इफेक्ट, ओवरऑल डिटेल में जाना जरूरत नहीं है ज़्यादा। मतलब तो सेवन वही कलर से स्प्लिटिंग ऑफ अगर, लाइट, हाँ। हाँ, 7 कलर तो से अगर लाइट पास होगी तो वो व्हाइट लाइट होगी। जो हाँ, उसी का एक वही इफेक्ट नहीं है, वो तो अलग सी हुआ था, लेकिन बात हो रही है कि जो रमन इफेक्ट है ना वो बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के हिसाब से अलग अलग स्पेक्ट्रम में, हर हर एक लाइट का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है उसके हिसाब से, तो उसी में लिखना है। हाँ, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ कहाँ गैस। कहाँ यूसेज हो सकता है, कहाँ कहाँ यूसेज हो सकता है, तो बोल सकते हो जो भी लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा ना, तो उसमें आप बोल सकते हो इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी, ऐसे करके हम्म। टेलीस्कोप में या फिर आप रिफ्रैक्टोमीटर में, सब जगह ठीक है। हेल्प होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जर्विंग ऑफ द सोलर सिस्टम या फिर स्टार्स, तो हम्म। उससे हेल्प होता है। आई थिंक वी हैव टेकन अप। हाँ। ठीक है कौशिक, आई थिंक अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। Okay. ओके, आई विल कंक्लूड, देन मानसी, देन प्रवेश कैन कंक्लूड. First of all, we discussed in the Hindi newspaper regarding the mud flat. What is that? It is an intertidal zone, which is uh, semi-density, semi-liquid mud sediment that has been drawn from by the river, etc. And it is important for coastal defense because it is very useful for the mangroves cultivation or growing of the mangroves. Regarding the India Australia, we discuss what are the important issue, that is CEPA on the basis of the, sorry, CEPA nahi, CECA हाँ। on the basis of UAE, then Quad cooperation, then 2+2 dialogue on various issues such as critical technology, clean energy, global biofuel alliance, global south mandate, multilateral institution reform, etc. Then the High Court has caused Haryana's demand for 75% of reservation for private sector. We discussed that uh, private sectors have their own rights to make certain provision, and it is not duty of the state to give reservation to the private sector. और इंदिरा सोनी जजमेंट इसे बताता है 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है बाय तमिलनाडु एंड अदर स्टेट. Then regarding sustainable fuel, we discuss about the hydrogen fuel, biofuel, then ethanol, etc. But
we see that जो भी फ्यूल है इट इज नॉट सस्टेनेबल इन अदर सेक्टर सच एज शिपिंग इंडस्ट्री में, वहाँ पे डीजल अभी भी यूज हो रहा है, कोल यूज होता है, एंड इन जेट फ्यूल में भी उसका भी ऑल्टरनेटिव नहीं मिला है जेट फ्यूल का भी, तो उसको भी बढ़ाना चाहिए. देन regarding the biosensor, we discussed what is the biosensor and what are the uses of it in the medical terms. We use gold nanoparticles, silver nanoparticles to identify the problems in the body through the use of biosensor. And then we talked about the vaccination in the chicken pox. Then regarding the CCP, Communist China, their project of PRI initiative and CPEC that is being passed through the Pakistan region, joining the Gwadar in the Arabian Sea, and how it is defaulting in on various aspects because of the local people resistance, Baluchi people, and also the cost overrun corruption. Then we talked about the Sri Venkataraman, who was the RBI ex-RBI governor, and he died recently. He was important. He was an important element in the banking reform in the sector, and also he portrayed the higher ethical standard in RBI. Okay. Okay, Mansi, you can take. Okay, so first we took up in detail about Goa. So Goa में we see कि tourism led growth या development देखी जाती है. It is basically हम बोल सकते हैं एक तरीके से external factor हो गया जो गोवा की growth को drive करता है. But how Goa can become a self-reliant state? और कौन से areas में हम growth देख सकते हैं? तो in terms of education एक educational hub बन सकता है. Here we are seeing growth of Atal tinkering labs, also skill education it can play an important role. Then in heritage and cultural tourism it can become an important spot. Here we talked about the Saptkoteshwar temple located है जो कादम्बा dynasty के दौरान बनाया गया था 12th century में. Deep stump इसका एक unique element है and ये एक time पे जैन मठ भी था. So important aspect हो गया. एंड अर्बन स्टेट मॉडल की तरह भी हम गोवा से लर्न कर सकते हैं कि कैसे सस्टेनेबली अर्बन डेवलपमेंट हो सकती है. देन गोवा कैन ऑल्सो बिकम एन लाइक द नेक्स्ट केरला इन टर्म्स ऑफ बीइंग द आयुर्वेदा हब. सो वहां पे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी डेवलप कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरिंग हब भी गोवा बन सकता है फॉर स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में. एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, वी आर सीइंग की गति शक्ति प्लेटफॉर्म के थ्रू इवन कल्चरल मैपिंग दैट इज ऑल्सो बीइंग डन. सो सिनर्जेटिकली हाउ it can emerge to be a great model in self-reliant state. Then we talked about real estate sector में quality checks होना important है, quality of material जो use किया जा रहा है because of the tragedy that we saw in the society, the Chintal's Paradiso. So auditing important हो जाता है, उसमें CSIR और CBRI they can play important role. And RERA जो real estate regulatory authority है उसका role definitely बहुत important है. प्रिवेंटिव डिटेंशन की हमने बात करी जो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, दैट इज टू प्रिवेंट बेसिकली क्राइम. मतलब क्राइम हुआ नहीं है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यू बेसिकली बिलीव कि हो सकता है वो क्राइम. सो ऑन दोज लाइक नोशंस आप यू गो अहेड विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन. देन वी टॉक्ड अबाउट कि जुडिशरी में क्रॉनिक प्रॉब्लम्स क्या हैं. सो ब्रॉडली स्पीकिंग जुडिशरी में accessibility to affordable justice by the poor people, that is one major concern. And इससे क्वेश्चन आता है कि क्या और ज्यादा बेंचेस क्रिएट करने की जरूरत है या नहीं है, या इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है. तो अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, so we are focusing, we have introduced e-courts after 2020, ICT enabled benefits हमें देखने को मिल रहा है. We are also looping in artificial intelligence so that again we can reach the last mile. And transparency reforms की we talk about, so live streaming हो रही है of the judicial hearings. And then collegium system में भी we say कि transparency नहीं है, system is opaque in when it comes to the appointment of judges. So collegium system में we are focusing diversity balance maintain करना important है, which has been highlighted by our CGI. And apart from this, national judicial data grid is another important aspect, data driven storage जो हो रहा है. And then again accessibility of justice के लिए ग्राम न्यायालय इस पे भी focus किया जा रहा है. And pendency of the cases में again e-courts help करेंगे. So 5 crore cases they are pending, AI का use कर रहे हैं transcription, so that would be helping. Then bad cholesterol की हमने बात करी. So for that bad cholesterol हम low density lipid profile को बोलते हैं, उसमें हमने बात करी gene therapy and technological evolution CRISPR-Cas9 के through how we can control the bad cholesterol growth. इसमें
PCSK9 जीन की हमने बात करी कि उसका ग्रोथ हमें रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है. Then we talked about startups in India. So startups basically India में third largest startup ecosystem है. Number of startups 1.1 lakh and 7 in 7 strategy पे हम focus करें. $7 trillion of Indian economy in next 7 years. Blue collar jobs जिसमें daily wage earners they're earning the wages. And एक ट्रांजिशन या हमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो देखने को मिल रहा है नॉर्थ इंडिया में वी आर सीइंग मोर ब्लू कॉलर जॉब्स बीइंग जनरेटेड या सप्लायर्स जो है माइग्रेंट्स दे आर मूविंग मोर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू द गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज. सो लास्ट वी टॉक अबाउट कि tuberculosis के cases increase क्यों हो रहे हैं. So that is because of again antimicrobial resistance. Then COVID-19 की वजह से जो weakened immunity and lung infections increase हुए and the problem of air pollution. So it is a bacterial disease and we also have the vaccination which is the BCG vaccination for the TB. And last important fact कि झलकारी बाई, she is a woman revolutionary from the state of Haryana. So as we talk about more about the Jhansi Ki Rani, so we can also take this example also. So these were all the topics from my side. Havish, if you want to conclude, you can go ahead. Okay, so thank you so much for giving me the chance. And I will not go into details, so I'm highlighting what we have discussed in brief. So in the economy sector, we have talked about what is the importance of the real estate sector, what are the real concerns of it, and what are the steps we are taking. Then number two, the foreign stocks. We were seeing during the Diwali season that they were in the rise, but today we are seeing that they are depleting. Then the chief economic advisor of the Ministry of Finance is talking about the 7 trillion economic growth, which we are going to achieve in the 2030, along with the carbon neutrality target. Then our gold exports are rising. The Chinese exports are coming down because of the indigenization policy, which the Indian government is taking constantly in collaboration with the state governments. Then the internationalization of the rupee, via the bond we talked, green codes about the Griha in the real estate sector, how we are focusing about the climate change infrastructure, then when we are using the bamboo in the road and the national highway and the expressway, then the Cotton Association of India, which was left by my friends, and the FSSAI, which was taken in detail. Apart from that, we talked about three personalities today. Number one, the Venkat Raman, who was a banker and internationalist, as well as an author, and as well as a finance secretary of India. Then we talked about the C.V. Raman, who is known as a physics person. And then in the last, Jhalkari Devi, who hails from the Palwal of the Haryana, participated in the 1857 revolt. Apart from that, in the biodiversity and the ecology area, we talked about what are the sustainable fuels, what are their importance, what are the examples of those, what is the pollution, what are the pollution standards, AQI, what about the citizen charters dealing the pollution, then the health effects, diet intakes we can do during the winter season. Apart from that, the two important species of the animal we talk today, number one is the vultures. Vulture sanctuary we talk about, that is the Ramaranga in the state of Karnataka. Then the elephants. What is the importance of elephants, not only in the terms of environmental conservation, but also for the culture and the recreational activities. Apart from that, in the recreational activities, we talked about three things: how the marriage is important as a structure in the Indian scenario, and some sort of commercialization we are seeing and witnessing today. Apart from that, the Sapkoteshwar temple in the state of Goa, which had seen the wrath of various incursions, and still showing this magnificence of the Lord Shiva. Then the Chhat Puja, which is considered as the Lord Sun holy festival every year, which is celebrated particularly in the state of Bihar. Apart from that, in the medical stream, we talked about three major reforms in the TB when we talked about the BCG vaccine, then the chickenpox, on which the vaccines are showing the multi-drug resistance, and some sort of ill pills are again going on there. The biosensors used in the medical, then the nanotechnology. Then in the constitutional and the political sphere, we talked about what are the judiciary concerns, what are the reforms. My friend talked in detail about those, so we are not going to take them again. Then what is the meaning of the constitutional morality, how it upholds over the societal morality. Then what is the difference between the judicial preventive measures and the preventive detention, punitive detention, what Article 22 talks about. Then the governor, the institutions of governor, which is considered as the over-constitutionalization these days because of the active practices taking place in the state of Puducherry, Delhi, Tamil Nadu, and other states also. Then we talked in the last about the